All right, so we begin today with topic of class 12, that is electrostatics, right? पहला चैप्टर जो है आपका electrostatics है. जिससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि 12th में there is a flow. You start with electrostatics. Electrostatic जैसे नाम ही बता रहा है, देखिए electro plus statics. Now what we mean by static? Static means something at rest. तो इस चैप्टर में जो भी फिनोमेना आप पढ़ते हैं, these phenomena are associated with the charge at rest, stationary charge. Now what can a stationary charge do? A stationary charge can produce electric effects. Now what I mean by electric effects, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा. कोई दूसरा अगर चार्ज इसके पास आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, राइट? फिर इसका कुछ पोटेंशियल होगा, उसके साथ एसोसिएटेड कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. ये सब एस्पेक्ट जो हैं ये किससे एसोसिएटेड है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज से. तो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एट रेस्ट. क्या कहा मैंने आपसे? इलेक्ट्रिक फिनोमेना या इलेक्ट्रिक फिनोमेना associated with charge at rest. So it is must that charge should be at rest. It should not be moving. Then if the charge begins to move, we say current is flowing, right? तो जो moving charge होता है वो क्या करता है? Moving charge produce करता है magnetic effect, right? जो moving charge होता है उसका magnetic effect produce होता है. वो फिर हमारा current के बाद जो next chapter है that deals with magnetic effect of current. What I said, stationary charge produces electric effect, moving charge produces magnetic effect, and accelerated charge produces electromagnetic waves, right? A charge when it gets accelerated, ये क्या बनाएगा? Electromagnetic waves, जो आपके NCERT 1 का last chapter है. तो ये NCERT 1 complete is related to electric aspects, magnetic aspects, and electromagnetic waves, right? Or we are beginning the journey with this electrostatics, right? तो जैसे हमने वर्ड यूज किया यहाँ इलेक्ट्रिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एट रेस्ट. सो पहली बात जो हमें समझ में आनी चाहिए कि व्हाट वी मीन बाय चार्ज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड चार्ज? एनी मैटर, दिस होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ व्हाट? इट इज मेड ऑफ मैटर. एंड व्हाट इज मैटर मेड ऑफ? इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स. व्हाट आर पार्टिकल्स मेड ऑफ? एटम. And what are atom made of? They are made of protons, neutrons that are inside the nucleus, and you have what? You have electrons, right? So proton, neutrons, electrons, they are part and parcel of any matter, any atom. So हमें भी करोड़ों, millions, trillions of atom है. We have million, trillions of charged particle in us. So are we charged? We'll say no, we are not charged. A body is said to be charged when number of electrons are either more than the protons or they are less than proton. अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं तो बहुत सारा चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज कितना है? 0, right? A body is said to be charged when either electrons are greater than protons or electrons are lesser than protons. When electrons are greater than proton, we say it is negatively charged, and when they are electrons are lesser than this, we say it is positively charged, right? So a body can be positively or negatively charged, but it is very important to understand a body is called charged when electrons are in surplus or they are in deficiency, right? How many ways this can happen? All that will come, but first I want to make it very clear to you that this negative and positive, they are not algebraic in nature. Okay? Now what I mean by this, supposing किसी टेस्ट में एक बच्चे के +6 मार्क्स आए और नेगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट था और दूसरे बच्चे के -6 मार्क आए, तो ही मे वेरी वेल टीज दैट पर्सन कि मेरे मार्क तेरे से डबल आए, राइट? +6, 0, -6, so difference is of 12. Similarly, if you have, let us say, 20,000 rupees in your bank and somebody has 20,000 rupees loan on him, so you will say my property is +20,000 whereas your property is -20,000, so my property is double that of yours.
Now the charge on the proton is how much? Proton पे charge होता है plus 1.6 into 10 to the power minus 19 and charge on electron कितना होता है? minus 1.6 into 10 to the power minus 19. So a proton may well say to an electron that my charge is double your charge. But you know one thing, that there is no such thing. We say charge on electron and proton are equal because this positive and negative are not algebraic. They are related to what? They are related to convention. They are related to nature. ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ नाम है, राइट? जो किसने दिए? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. उससे पहले आप इनको कहते थे वाइटरस एंड रेजोनेंस, है ना? आप इनका नाम कुछ भी रख सकते थे. यू कुड हैव नेम्ड देम अनिल एंड आकाश, नो प्रॉब्लम. Okay, name are not important. You could have called them A and B, no matter. Okay, someday if you become a position of power, maybe change it on your name. Nobody cares. But as on today, positive and negative, they are not algebraic. They are signs. They denote nature because there are two types of particle. One positive, they denote a different nature, and negative, they are different nature. But they are not having algebraic meaning whatsoever associated with them. Now, once we know now what is the meaning of this charge word, okay, then we can talk about the first aspect, properties associated with charge. Charge के साथ आप कौन-कौन सी properties associate कर सकते हैं, है ना? है ना? तो पहले सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बात समझें कि ये चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता. देयर इज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद चार्ज. So it's a scalar, right? You know the difference between a scalar and vector? So this is a scalar. The second property that I can associate with charge is following. That is, charge is a derived quantity. It's a derived quantity. Now what do I mean by this? आपको मालूम है कि SI में कितनी quantities fundamental हैं? 7. और उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए फंडामेंटल कौन है? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. और आप जानते हैं कि करंट क्या होती है? दैट इज चार्ज अपॉन टाइम. सो चार्ज क्या होगा? करंट इनटू टाइम. बट दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम fundamental, that is time, and fundamental, that is current. That is why I wrote here, it is a derived quantity, it is not a fundamental quantity. Mass is fundamental, current is fundamental, time is fundamental, but charge is derived quantity. What is the dimensional formula of charge? You will say it is quite simple, m0 L0 AT, right? No mass, no length, A because current is measured in ampere, and T, that is the dimension associated with time. So the dimensional formula of charge is m0 L0 AT, right? Then next comes the unit of charge, right? So a unit of charge, when we talk about unit, the first thing is the SI unit. That is System D International takes the unit of charge to be coulomb. This is coulomb, right? But CGS unit of charge is ESU. That is electrostatic unit. Electrostatic unit. Now many people call this stat coulomb. So stat coulomb is another name for what? Another name for ESU. Many people name this as Franklin in honor of Benjamin Franklin. They call it Franklin. So whether you call it Franklin or stat coulomb or you call it ESU, the meaning is same. It is what? It is CGS unit associated with the charge. And what is the equivalence? 1 coulomb of charge is equal to 3 into 10 to the power 9 ESU. Okay, like 1 meter is equal to 100 centimeter. Similarly, 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 electrostatic unit, right? This is CGS and this is your SI, right? The next thing we should know about charge is that charge is invariant. Now what I mean by this, let me explain. Charge is invariant, that means charge is independent of what? It is independent of the motion of body, right? आपको पता है एक बात कि mass जो होता है, mass of a body depends on velocity of the body. You don't encounter that in real life, I know, but the true formula for mass is what? M is equal to m0 under root of 1 minus v square by
c square. Now generally what happens? This v is very small in real life. A car may move at, let us say, 10 meter, 20 meter, 30 meter per second. A bullet may move at 100 meter per second, but that is very small in comparison to 3 into 10 to the power 8. So this term becomes what? This term becomes 0. So what you take, rest mass equal to the real mass. But if something begins to move with the speed of light, supposing it does, then what will happen? C square by C square will become 1. 1 minus 1 would become 0. And anything divided by 0 is infinity. Infinity. So what is the meaning of this? If this becomes infinity, that is why we say, हम physics में कहते हैं ना कि nothing in this world can ever move with the speed of light. Only light can move with the speed of light because light comprises of photons. And photons are what? They are massless. उनका rest mass कितना होता है? 0. तो अगर ये term 0 है, तो 0 divided by 0 will give you 0. Only photons can move with the speed of light. No matter how small, can acquire the speed of light. Okay, the mass is dependent on velocity, but charge is invariant in the sense it does not depend on the velocity of the body. Whether the body is at rest or it begins to move, it will have same amount of charge associated with it, right? The next thing that you should know about charge is following. Let us introduce to you what is the meaning of charge density. Okay, so there are three types of charge densities that you will use in our study of electrostatic. Let me name them. They are somehow the same thing जो आप पहले पढ़ के आए थे. Remember, जब मैंने आपको unit and dimension पढ़ाई होगी तो बताया होगा linear mass density, superficial mass density और volume density. Very simple. Mass per unit length was called linear mass density. Similarly, charge per unit length, this will be called what? This will be called lambda. Lambda is what? Linear charge density. Okay? Linear charge density. Similarly, sigma. Sigma is Q by A. That is charge per unit area. This is superficial or areal charge density. Similarly, the last symbol is rho. Rho is what? Volume charge density. That is charge divided by volume. ये आपको क्या देता है? ये आपको देता है volume density. Right? अब मेरा point ये है कि देखिए हमने कहा कि ये Q जो होता है ये depend नहीं करता है velocity पे, लेकिन आइंस्टाइन की जो theory है वो कहती है कि mass ये होता है. Similarly जो length of the body होती है ना, वो depend करती है किस पे? Velocity पे. जैसे जैसे आपकी स्पीड ऑफ द बॉडी बढ़ती जाती है वैसे वैसे लेंथ क्या होती है? कम होती चली जाती है, राइट? तो अब क्या हो रहा है देखिए, Q तो वही है लेकिन L क्या हो गया? चेंज हो गया. अगर L चेंज हो गया तो एरिया भी चेंज हो गया और वॉल्यूम भी चेंज हो गया. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये कह रहा हूं कि चार्ज इज इनवेरिएंट. चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी बट चार्ज डेंसिटी depends on velocity. It depends on velocity. Why? Because the dimensions of the body, that is volume, area and length, will not remain constant with the velocity. Right? So this again is a point. This is point number 6. Right? The next point that we can talk about is related to, let us compare the mass and charge broadly. एक तो ये बात समझ में आ गई कि अगर मुझे कोई कहे कि मास में और चार्ज में कुछ 3-4 डिफरेंस बताओ जी, तो पहली बात आप क्या कहोगे? आप कहोगे जी मास फंडामेंटल क्वांटिटी है और चार्ज क्या है? डिराइव्ड. राइट? है ना? ये नहीं बोलना है मास की स्पेलिंग ये होती है चार्ज की, वो सब नहीं बोलना है. मास क्या है? फंडामेंटल है, चार्ज डिराइव्ड है. दूसरा क्या है? मास वेलोसिटी डिपेंडेंट है जबकि चार्ज वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है. दो मासेस के बीच कभी आपने सुना है कि रिपल्शन हो? कभी नहीं होता है. तो मास के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन चार्ज अगर पॉजिटिव है तो क्या करता है? रिपेल करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. तो ये एक और प्रॉपर्टी डेवलप हो गई. वो क्या है? masses can interact attractively but charges can interact attractively or they can repel each other, right? So this is another difference. The next difference is quantization. Now this is something of paramount importance that the child should understand. हम आपसे सीधी एक लाइन की स्टेटमेंट बोल रहे हैं, that is charge is quantized. Charge is
quantized. If charge is quantized, what is the meaning of this word? देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है समथिंग विच इज इन डिस्क्रीट क्वांटिटी, राइट? तो इसको अगर आप ब्रॉडली लिखेंगे तो मैं चाहता हूं 2 लाइन इसके लिए लिखिए चार्ज कैन रिसाइड and can be transferred. Charge can reside and can be transferred only in integral multiples. Only in integral multiples of charge on electron. That is, any charge Q is equal to n times of E. E is what? E is 1.6 into 10 to the power minus 19. Now this can be plus or minus, where n starts from 1, 2, 3, 4, 5, so on. Right? Okay? What I mean to say is following. कोई भी चार्ज अगर किसी बॉडी पे है या वो किसी दूसरे को ट्रांसफर होना है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 जाएंगे या 20,000 जाएंगे या 10 करोड़ जाएंगे, बात अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी दूसरे से कहे मेरे 2.5 इलेक्ट्रॉन ले ले? ऐसा नहीं हो सकता ना। सो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन वी मेक फ्रॉम हियर? समटाइम्स वी आस्क स्टूडेंट्स कि बेटे हम कुछ यहाँ लिख रहे हैं चार्ज, आप बताइए ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, राइट? तो आई स्टार्ट एंड आस्क यू 3.2 into 10 to the power of minus 18. Is this charge possible or not possible? You will say, you see, you said this should be n into E. E is 1.6 into 10 to the power minus 19. This term cancels with this and you get 2. This term comes on the top and you get 20. N equal to 20. Now 20 is a integer. So this charge is possible. Now it's your turn to tell me whether this charge is possible or not possible. It is possible or not possible? 7.2 into 10 to the power minus 19. Not possible? Sure. Why? Because if I divide this by 1.6 into 10 to the power minus 19, I will get 4.5. So no charge can be in multiple of 4.5. So it is not possible. Okay. This one? Sure. हाँ, क्या होता है बच्चे 1.6 का मल्टीपल देखते ही कहने लगते हैं possible, and then they realize that it is not possible. Why? Because if you divide it by 1.6 into 10 to the power minus 19, you will get 0.01. And I told you, you cannot have a charge smaller than 1.6 into 10 to the power minus 19. Looking at this 21, you should have overruled this. You fell in the trap. 1.6 देख के you jumped to the conclusion that possible. 1.6 के साथ क्या आ रहा है? 10 to the power minus 21, which is 100 times less than the charge of electron. So how can an electron charge 1/100th of its charge to somebody else? It cannot, right? So that is not possible. So that is the first thing you can analyze, right? अब दूसरी बात जो मैं यहाँ से समझाना चाहता हूँ, हम कह रहे हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन रियल लाइफ में तो हमें चार्ज कंटिन्यूअस ही नजर आता है। तो कोई पूछ सकता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ ली? हाँ। क्वांटाइजेशन पढ़ लिया? हाँ। क्या होता है भाई क्वांटाइजेशन? सर चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इट इज इन मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, बट वी नेवर सी इट लाइक दैट, वी ऑलवेज सी इट अ कंटिन्यूअस थिंग। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज, you see, this E is very small. If I take a small charge, let us take a charge of 1 microcoulomb. What is micro? 10 to the power minus 6. Okay, let us take 1.6 microcoulomb. Now, how many electron will make this charge? 1.6 into 10 to the power minus 19. So, 10 to the power 13 electron. This is a huge number. Now, understand like this. If you have to walk from the bottom of the building to this floor, आप क्या करते हैं? कुछ steps चढ़ के आते हैं। तो हर step का जो size है, let us say वो 6 inches है। And then you are able to see what? You are able to see discrete steps. But if we decided that in between every step there should be 1000 more steps, then what would happen? The size will become very, very small. I have made only 1 point, मैंने तो सिर्फ 1000 और बनाए हैं, यहाँ तो 10 to the power 13 और बन रहे हैं।
तो आपको स्टेयर केस नजर नहीं आएगा, आपको क्या नजर आएगा? ए कंटिन्यूअस रैम्प. You will see what? You will see a ramp. You will not see stairs, right? यही रीजन है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है लेकिन वो क्वांटाइज्ड नजर नहीं आता है. क्यों? क्योंकि छोटे से चार्ज में भी जो नंबर ये चार्ज बनाता है वो, आप ऐसे भी सोचिए, हम सब किससे बने हैं? पार्टिकल से. लेकिन आपको जब मैं देखता हूं तो क्या पार्टिकल नजर आते हो आप? नहीं ना, आप तो मुझे एक बॉडी नजर आते हो. पेन भी मुझे एक बॉडी नजर आता है. नाउ दिस पेन में हैव सम zillions of particle in it, but they are visible to you, they are not visible to you. Can you count how many atoms are there in this? No one can, right? We cannot. We can only estimate it, right? And next type of question that we make from here is on that. I may tell you that I give you a glass which has 90 gram of water. You tell me how many electrons are there in this 90 gram of water. आप कहेंगे all right, you told us 90 gram of water. What is the molar mass of water? 18. So first thing you can do is 90 divided by 18, that is, you know, number of moles. Number of mole कितने होंगे? 19 by 18 यानी कितने? 5. So there will be 5 moles associated with 90 gram of water. एक मोल में कितने एटम होते हैं? तो now 5 into 6 into 10 to the power 23. These are number of एटम. वाटर का हर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10. H2O, H1, H1O, 8. तो कितने हो गए? 10. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 30 into 10 to the power 24. Now I may tell you that if I lump all these electrons together, how much of charge it will make? आप कहेंगे come on sir, you know the number, multiply this by 1.6 into 10 to the power minus 19, you will get the total charge associated with all the electrons in 90 gram of water. Now similar positive charge also is there with protons. So the net charge on the 90 gram water is 0. अब हम क्वेश्चन जब बनाते हैं फोर्स का तो हम कई बार आपसे कहते हैं कि 1 gram penny of copper is kept here and 1 gram penny is kept here at a distance, let us say 1 meter. If 1% of electron of this are transferred to this, what will be the force? Now how will you calculate? What material I gave you? Copper. Copper ka molar mass 64, 63 point something, but 64. So 1 by 64 will give you what? Number of mole. Multiply that by 6 into 10 to the power 23, that will give you what? Number of atom. Each copper atom में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29. तो multiply that, you will get what? Total number of electron. Multiply that by 1.6 into 10 to the power minus 19, you will get the total charge. Now transfer 1% of this to that fellow. So this fellow will acquire positive charge and that fellow will acquire negative charge, and these two will now attract each other with certain force that we will calculate. We will learn the formula. But what am I trying to tell you? I am trying to tell you that charge can reside and can be transferred only in integral multiples of charge on electron. You cannot transfer fractions. You cannot transfer 2 by 3rd of an electron to somebody. Now you may well argue that as science has progressed, okay, we discovered that the protons and neutrons are not fundamental, they are made from quarks. Similarly, if we someday discover that even electrons are not fundamental, they are made from some subparticles, then we'd say, what is the problem? Today the monetary unit is 1 rupee. You can transfer somebody 1 rupee or 100 rupee or 1000 rupee or 10,000 or 10 million, your choice. But you cannot transfer 1 by 3rd of a rupee, you cannot. But tomorrow if they say that let us bring back the old days where you have 1 paisa and 2 paisa and things like that, then you will be able to transfer 1 and 2 and 3 and 4 paisa. But the principle of quantization will still remain. But only the size of the quanta will reduce from 1 rupee to 1 paisa. Okay, doesn't matter. So उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मास का क्वांटाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं है. किसी को भी पता नहीं है कि कोई मास का फंडामेंटली कितना मास से मास बनता है. उसका क्वांटाइजेशन एस्टेब्लिश नहीं है. लेकिन चार्ज में हम श्योर हैं कि छोटे से छोटा चार्ज क्या होता है जो ट्रांसफर होता है.
इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे अगर क्वार्क ट्रांसफर हो गया तो, अरे क्वार्क जो होता है वो बेसिकली क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, किसका, प्रोटॉन का। और प्रोटॉन कहाँ रिजाइड करते हैं, न्यूक्लियस में। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड लाइक दैट। ट्रांसफर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमने अपनी लैंग्वेज में भी यूज किया है मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट। इज दैट क्लियर? आर वी टुगेदर? गुड. Next property I want you to understand regarding this charge is principle of conservation. Okay? Conservation का क्या principle होता है? ये conservation आपने पढ़ा है 2-3 जगह, है ना? 11th में आपने पढ़ा है, जैसे conservation of energy, conservation of linear momentum, conservation of angular momentum, and now we are studying about conservation of charge. I want you to write these 2 lines which I am dictating. Okay? Charges follow principle of conservation of charge. अब मैं इसमें क्या चाहता हूं आप लिखें, charged particles may get produced or destroyed. Charged particles may get produced or destroyed, but the net charge on an isolated system is constant. Very profound statement. I can give you many examples. Do you remember how many types of basic forces are there in nature? Class 11, chapter 1. Gravitation, electric, electromagnetic, nuclear, and then you had one more, weak. वो वीक के बारे में जरा याद करिए। वीक में क्या करते थे हम लोग, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता था, कुछ ऐसी बात करते थे ना हम कहते थे a neutron gets converted into proton and gives an electron, this is called the beta particle, and gives anti-neutrino. अब आप देखिए, पहले नेट चार्ज न्यूट्रॉन पे कितना है, 0, राइट, 0। प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, +1 प्लस ई, और इस पे कितना चार्ज है, -e। तो अभी भी आप देखें तो नेट चार्ज कितना है, 0। बट इफ यू नोटिस, 2 charged particles have got produced, but the net charge on the system is still same, constant. Many times I asked you this question, कि when an electron and a positron annihilate each other, how much energy is produced? देखो, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ना पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन दो अलग अलग बातें हैं। अगर ये कुछ थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेंज साउंडिंग लग रहा है तो अच्छी खबर ये है कि मॉडर्न फिजिक्स में ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉक्ड अबाउट इन ग्रेट डिटेल। अभी तो हम सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि देखो भाई, 2 पार्टिकल हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या फर्क होता है, देखो, positron is basically a positive electron. In which sense it is a positive electron? It has charge of a proton, but its mass is that of electron. उसका मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। आपको मालूम है प्रोटॉन इज 11836 times heavier than electron. So the particle which has charge of electron, but which has charge of proton and the mass of electron is called positron. When an electron and a positron combine, annihilate each other, they give you 1.02 mega electron volt of energy. आप देखिए नेट चार्ज कितना है इस पे, 0, -1 +1 0, तो नेट चार्ज इज 0. Okay, net charge is 0, and now 2 particles have got destroyed, and what you got, energy. एनर्जी पे चार्ज कितना है, 0. तो चार्ज वही रहता है, पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. इफ आई राइट एन इक्वेशन विच अगेन वी विल टॉक इन द न्यूक्लियर, देखो यूरेनियम 235, राइट, 92 यूरेनियम 235. 92 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 235 क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ये कभी कभी क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है. डिसइंटीग्रेट होता है, इसमें से अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 हीलियम 4, इसको बोलते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस.
भी सब में अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं। अगर इसमें से ये 2He4 बाहर निकल आया तो जो बाकी बचेगा वो क्या है? आप कहेंगे जी सिंपल है, 92, 2 has come out, so what you will be left with? 90, and you know 90 is thorium. 235 में से 4 चला गया, कितना हो गया? 231, right? 231, and there will be some amount of energy that will be released. You see what is happening? The net charge remains constant, right? So what the point is, in any isolated system, particles may get produced, particles may get destroyed, but what would not change? The net charge would not change. Is that okay? Right. This is another property that you can associate with charge, right? How is the charge measured? अगर किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? There is an instrument called electroscope और इलेक्ट्रोमीटर, है ना, उसके थ्रू हम पता करते हैं कि चार्ज है या नहीं है। इलेक्ट्रोस्कोप और इलेक्ट्रोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द चार्ज, राइट? ओके, विल टॉक अबाउट इट। अभी वो बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो नाउ विद दिस प्राइमरी आइडिया वी नो what this word charge means. Okay, we have only talked about one word, charge, and the properties that you can associate with charge. Is that okay? Right. Now let us study about methods of charging. The next heading I want you to put is methods of charging. How many ways can you charge a body? So there are many ways. Okay, if we look at our syllabus, there are 3 that we will talk about in detail. लेकिन देयर कैन बी मेनी वेज। ओके, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, व्हाट इट मींस, यू टेक एन एलिमेंट, हीट इट अप। अब क्या हो रहा है, आप थर्मल एनर्जी दे रहे हो, तो ये थर्मल एनर्जी पाके अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं तो क्या होगा, जो रिमेनिंग मैटर है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। इफ यू हैव मैटर, let us say a metallic sheet, and you bombard some particles on this, right? Now they have kinetic energy. This kinetic energy will do what? This will be absorbed by the electrons and the electrons may come out. If they come out, remaining material will become charged. You put light of appropriate frequency on sodium surface, okay, or alkaline surface. तो ये एनर्जी जो आ रही है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके बाहर निकल आए तो रिमेनिंग सरफेस क्या हो जाएगा? चार्ज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? देन यू मेक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड में डू व्हाट? इट में पुल द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मटेरियल, कोल्ड कैथोड इमिशन. ऑल दीज मेथड्स, एनी वे you disbalance the number of electrons versus number of proton, you will charge up a body. But we are primarily interested in 3 methods of charging. Okay, the first is charging by friction. Charging by friction. How do you charge up a body? By friction, right? Then the next method would be conduction and the next would be induction. But let us take one by one. First of all, let us discuss what is this method of friction. देखिए, what we mean by charging by friction. You take 2 surfaces, 2 bodies, and you rub them with each other, right? What will happen? What will happen? The friction between them will constitute to what? It will supply the energy. अब एनर्जी जब मिलेगी तो क्या होगा? दोनों में से एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और दूसरी नेगेटिवली चार्ज होगी। क्यों? जो बॉडी रेडीली इलेक्ट्रॉन देगी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन कंजर्वेशन प्रिंसिपल से आपको पता है नेट चार्ज क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो जो एक खोएगा दूसरा वो पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जिसको मिलेंगे वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और जो खोएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आप कहेंगे कि क्या एक पत्थर का पीस लूं, उससे दूसरे पत्थर पे रगड़ूं तो वो चार्ज हो जाएगा? तो नहीं होगा। आप एक कोम लीजिए, यू रब इट इन द ड्राई हेयर, ओके, द हेयर शुड नॉट हैव ऑयल इन इट एंड इट शुड नॉट हैव वाटर इन इट। क्यों? अगर वैसा है तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। सो ड्राई हेयर में अगर आप कोम रब करें and then you take it near the piece of paper, you know the piece of paper will be attracted. Okay, take this pen, rub it on woolen surface, right? Or you rub it in your hair and take it near a balloon.
the balloon will be attracted towards it. You know, for your birthday party, what you can do, balloon liye, rub it in the hair and put it on the wall. They remain there, right? They remain there. All this, you see, you are charging up by friction. You are charging up by friction. है ना? अब कुछ डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स जैसे मैं आपको देता हूँ, ग्लास की टेबल है घर में, ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम में, ठीक है, यू क्लीन इट अप, बट अनफॉर्चुनेटली वेन एवर गेस्ट कम्स देयर इज सम अमाउंट ऑफ डस्ट ऑन दैट, है ना, द डस्ट सेटल्स वेरी फास्ट ऑन दिस. ऐसा क्यों होता है? ग्लास ये डस्ट को क्यों गैदर कर लेता है? आपकी गाड़ी है, विंड स्क्रीन, उसके ऊपर डस्ट आ जाती है, क्यों? क्योंकि when you rub this surface of glass to clean it, okay, rubbing will constitute to friction, and friction would do what? It will charge up the glass surface. ये जब ग्लास का सरफेस चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा? ये जो मैटर में, ये जो एनवायरमेंट में आपका चार्ज है, हैंगिंग चार्ज, राइट, ये डस्ट मॉलिक्यूल्स के ऊपर रिजाइड कर रहा है, तो ये चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और डस्ट पार्टिकल क्या होंगे? उसके ऊपर आके सेटल हो जाएंगे, राइट? Okay, so this is why it happens. Now charging up by friction, many other examples we can talk about. If you look at the vehicles, high speed vehicles, they carry inflammables. अगर पेट्रोल कैरी कर रही हैं, kerosene कैरी कर रही हैं, inflammable gas कैरी कर रही हैं, inflammable मतलब they catch fire very fast. तो you must have seen that there is a chain hanging from them. एक चेन उससे हैंग होती रहती है जो ग्राउंड के साथ टच कर रही होती है, right? So why do you put a chain there? Understand? ये जब हाई स्पीड व्हीकल एयर के थ्रू मूव करेगी तो क्या होगा? एयर और इसके फ्रिक्शन के कारण कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा. Now what you want? You want this charge जो डेवलप हुआ है, this should go to the ground. If this goes to the ground, then neutrality of the surface will be maintained. But if you don't do this, क्या होगा? एनवायरमेंट में जो फ्री चार्ज है, अगर इस पे पॉजिटिव अक्यूमुलेट हो गया और एक नेगेटिव इससे इंटरेक्ट करेगा तो देयर विल बी अ स्पार्क, एंड इफ देयर इज अ स्पार्क, द गैस और द केरोसिन और द पेट्रोल में गेट फायर. So that is why for a safety measure आप क्या करते हैं? You put a chain there. Aircraft के जो टायर होते हैं, they are made conducting, है ना? When the aircraft lands with a high speed, it will touch the runway and the tires will rub on the surface. If they rub on the surface, certain amount of charge will get developed. If the tires are conducting, that charge would go to the ground. Okay, if they are made non-conducting, then this charge will reside on the aircraft which carries ATF. इसमें fuel है, so that may catch fire, right? So you have to neutralize that charge. अगर आप देखें तो एयरक्राफ्ट के आगे ऐसी एक बीक होती है, शार्प एक स्टिक सी लगी होती है, very sharp there. What is that? And sometimes if you see, you will see some blue tinge there, you know. That is corona discharge. Okay, what happens? The charge has a tendency to reside on the sharp points. We will discuss all this in due course of time. लेकिन अभी you have to buy it on the face value. क्या होता है? चार्ज की टेंडेंसी होती है शार्प पॉइंट्स पे अक्यूमुलेट हो जाने की. तो ये तीखी सी जो रॉड आप लगाते हैं, इसके टिप पे क्या हो जाता है? चार्ज जमा हो जाता है और ये चार्ज जो होता है ये क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता रहता है. और न्यूट्रलाइजेशन से जो ग्लो प्रोड्यूस होता है, that discharge is visible to you as light, blue light. Okay, so you see this many times. This light is corona discharge. Many other examples of friction can be given to you. I talked about Bowser's and I talked about why do you have this any socket you see in the house, you have a live, you have a neutral and then you have this earth, है ना? ये तीन पिन होती है इसमें, एक तो लाइव होती है, एक न्यूट्रल, दो तो चाहिए फॉर एनीथिंग टू वर्क. यू डोंट नीड दिस, इवन इफ देयर आर टू, काम होगा, है ना? लेकिन ये तीसरी क्यों बनाते हैं? स्पेशली, हाँ जी, चार्ज न्यूट्रल हो जाए अर्थिंग के लिए, है ना? अर्थिंग के लिए जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो क्या होता है? एक एक्स्ट्रा वायर, अर्थिंग की वायर हर जगह से रन की जाती है और ये सारे कनेक्शन जो है ना ग्राउंड वाले, ये सब अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं. जब घर का कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है तो दे डिग अराउंड 7 to 8 feet, दे पुट अ ब्रास शीट देयर, दे पुट अ आयरन रॉड देयर एंड ये अर्थ का वायर उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ना? इट इज नॉट समथिंग फॉर कोई अंधविश्वास नहीं है इसके पीछे कि उसमें कोयला और नमक डाल के उसको बंद करते हैं, ये कोई पूजा पाठ नहीं है. दिस इज साइंस. यू आर डूइंग व्हाट?
you are providing an easy path for the charge to flow, right? So if by chance your washing machine, the live or the neutral wire breaks and is touching the body of the machine, and if there is no earthing, what would happen? When you go and touch that, you are providing a path for all the charge to flow through you, and you will get a shock that you will remember for a lifetime if you survive. Okay, but if it is earthed, then there is an alternative path available for the charge to flow. तो पूरा चार्ज आपसे फ्लो नहीं करेगा, एक झटका लगेगा आपको, लेकिन you will be surviving for another झटका. But in that other case, if there was no earthing, that may be the last झटका you would have got, right? So that is dangerous. Okay, so that is why they put that earthing. Okay, all excess should go. Your computers, okay, your TVs, ये टीवी स्क्रीन के सामने आप अपना ऐसे हाथ रखिए, तो you feel something, some tingling sensation. वो क्या है? That surface is charged, है ना? And your this hair there will be attracted. And they put that electrostatic screen and all that gimmick, है ना? That is nothing dangerous there. आपके ऊपर भी कभी-कभी इतना charge होता है, especially in winters when you're walking, you touch something iron, अपना you get this unpleasant sensation, है ना? And night, if you are taking off your sweater, you see a lot of sparks flying if it is dark. You know how much of voltage does it take to produce a spark? Around 20,000 volt. Around 20,000 volt. अगर इस 220 में किसी ने हाथ डाल दिया ना, तो जिंदगी भर याद रखोगे इसको. तो 220 में तो हालत खराब हो जाती है ना? लेकिन 20,000 आप अपने ऊपर कैरी करके चलते हो, कोई पता भी नहीं चलता. Are you getting my point? Are you getting my question? A shock of 220 volt will put you on the ground, but you carry 20,000 volt on you without even realizing it. How is it possible? It is not the voltage that is important. What is important is, Harshit, the recording is going on, so I would limit myself. Okay, right. Okay. So, what I was talking, distract कैसे हो जाते हैं हम लोग? Voltage. Yeah, voltage is not important. What is important is current giving capacity. If you put your hand there, lot of charge can flow continuously through you. Okay, but there, whatever charge you carry on you, that would have given rise to potential. But the amount of that charge is very small. That cannot flow for sustained amount of time. एक झटका आएगा बस, that's all. Unpleasant sensation. Nobody ever dies of that. Okay, but this is dangerous because a continuous kind of supply, continuously it will flow through you. है ना? कई लोग ये कहते हैं, वो करंट ने अट्रैक्ट कर लिया, करंट ने पकड़ लिया. ये ऐसा नहीं होता है ना? ये सब नहीं होता है. But even a word of advice to you, that if this is some current carrying wire by chance, and you have to find out whether it is carrying current in it or not. Supposing you opened some switch and you don't know which is phase and which is neutral. The best way is you ask your friend to hold the wire, right? And if he doesn't slap you, you say, okay, pata chal gaya, neutral hai, right? And if he slaps you, you know that it was a live wire. This is the best way to do it, but the other way to do it, if you have to do it yourself, please don't touch it like this. Touch it like this. Why? What is the difference? The difference is your nervous system, if you see, you touch it like this, then your brain will get, you will get a shock and your brain will send a signal to your hand and your hand will close on itself. So what will happen? Your hand will automatically go away. But if you touch it like this, your hand will close on this. है ना? फिर आप कहोगे करंट ने पकड़ लिया, ये कुछ नहीं, आपने उसको पकड़ लिया. एंड फिर क्या होता है, ये सस्टेन करंट जब आपसे फ्लो होती है तो आपका नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है. फिर ब्रेन इज अनेबल टू सेंड द सिग्नल टू हैंड दैट रिमूव इट. नाउ दैट ब्रेन इज पैरालाइज्ड. And then you keep on holding it like this. Okay. You think किसी ने attract कर लिया, किसी ने attract नहीं कर लिया, you are foolish. ऐसे होता है ना, जब a scooty is about to collide with a car or something, somebody comes suddenly in front of you, speed और बढ़ जाती है. Natural है. देखो, आप ऐसे जा रहे हो, something comes in front of you, this happens. This is natural. This does not happen naturally, right? This is not natural. No, you have to put effort for this. And if you are just going and somebody comes, this will happen naturally. Okay. So the advice to you is, if you are not sure, please touch like this. Safe. Don't touch like this. Okay. Okay, this has nothing to do with physics, but still, okay, right.
ग्राउंड का कनेक्शन क्यों होता है ये समझाने के लिए बात शुरू हुई थी कि ग्राउंड का वो कनेक्शन इसलिए होता है, इट्स अ सेफ्टी मेजर. You have many safety measures in your house. You have that fuse. These days we don't put fuse, we put that cutouts, circuit breakers. If there is any overload in the house, okay, then what would happen? That circuit breaker will trip, to avoid any overload. You have ECBs, earth circuit breaker. If there is any earthing anywhere, then that thing will trip. Okay, that is a safety measure. So all these measures are available, but all this, we're talking about charging by friction. Ab friction mein, जैसे if I take a glass rod and I rub this with silk, okay, then the glass becomes positive and the silk becomes negative. Now the question comes to my mind that supposing you and your friend go out for a dinner, you pay for it. Next time you go, you pay for it. Now you 10 times you go, now you expect sometime he also should pay, right? So why this is like this, that every time, 1 million time I rub, every time ग्लास बिकम्स पॉजिटिव. ऐसा क्या जादू है कि ग्लास ही पॉजिटिव बनता है? कभी कभी तो इसको भी नेगेटिव बनना चाहिए ना. देखिए, कौन पॉजिटिव बनेगा कौन नेगेटिव बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन का मीनिंग है द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ सरफेस. नाउ इफ द नेचर ऑफ दिस फेलो इज दैट इट्स वर्क फंक्शन इज वेरी लेस, means it is too willing to give electrons, तो क्या होगा? Electrons will readily come out from glass, so it will become positively charged. And if they come out, silk will say thank you very much, I will take it. Then silk will become negative, glass will become positive. Now the point, I said अगर फ्रिक्शन से ही चार्जिंग होती है तो एक स्टोन का पीस लेके फ्लोर पे रब करता हूं, आप कहेंगे सर ये चार्ज तो नहीं हुआ, आपने तो झूठ गलत पढ़ा दिया था हमें. कहूँगा बेटा ऐसा है कि चार्जिंग तभी हो पाएगी जब दोनों में से एक का वर्क फंक्शन कम हो, है ना. इन दोनों का ही वर्क फंक्शन ज्यादा है तो वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है टू नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सो नथिंग विल बिकम चार्ज, राइट. ओके, सो व्हाट इज नेसेसरी? दैट वन शुड बी विलिंग टू गिव एंड अदर शुड बी विलिंग टू टेक, राइट. इट्स अ टू-वे process. If a teacher is teaching, he is putting his effort, but the student is not listening, then the charging would not take place. It will take place only when the knowledge goes from here and it reaches to somebody, and the somebody tries to grab it, right? Remember that Kirchhoff's law? What is that? All good emitters are good absorbers. And I always tell you there are 3 kinds of students in the class: good absorbers, good reflectors, and good transmitters. Okay, now what will happen? एक जना वो होगा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो सुन ही नहीं रहा आपको. जब एग्जाम आएंगे तो वो लिख पाएगा? नहीं. एक वो है जो सिर्फ यहां से सुनता है, यहां से निकालता भी जाता है, वो भी नहीं कर पाएगा. वो जिसने एब्जॉर्ब किया है वही वापस एमिट कर पाएगा. तो यही आपका किरचॉफ का लॉ था और ये फंडामेंटल है. दूसरा तरीका जिससे आप चार्जिंग करते हैं, द सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग दैट वी टॉक अबाउट is charging by conduction. Okay, conduction. Now इसमें थोड़ी सी बात समझिए अच्छे से. कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग कैसे होती है? When we talk about charging by conduction, there are 2 bodies, and what is essential in conduction, that 2 bodies should touch each other. There should be physical contact between the 2. Okay, एक के पास ज्यादा चार्ज है, अब दूसरी न्यूट्रल हो सकती है या दूसरी चार्ज हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता. जब इन दोनों को मैं टच कराऊंगा, राइट, तो क्या होगा? एक से चार्ज दूसरे में ट्रांसफर होगा. कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए. अभी पोटेंशियल क्या होता है आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसे समझिए, इस टैंक में 20 लीटर पानी है ना, और 1 मीटर तक पानी भरा हुआ है. ये टैंक खाली है. अगर मैं इन दोनों टैंक को जोड़ दूं तो क्या होगा? इसमें से पानी इसमें आएगा. कब तक? सेम लेवल तक, जब तक दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए. ये जरूरी नहीं है कि दोनों में क्वांटिटी बराबर हो जाए, है ना. जैसे ये आपका एक वेसल है और ये आपका दूसरा वेसल है, राइट. अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आपने जैसे कहा कि जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, तो अगर इसमें 10 लीटर वाटर था
तो अब इसमें 8 रह गया और इसमें कितना आ गया 2, एंड नाउ द फ्लो विल स्टॉप. व्हाई? बिकॉज द प्रेशर हैज बिकम इक्वल. हियर द फ्लो विल स्टॉप व्हेन द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. द चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ temperature difference. Okay, so here what will happen? The charge will stop getting transferred when they come to equal potential. क्योंकि अभी potential पढ़ा नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे, जितने भी क्वेश्चन देंगे हम आपको शुरुआत में, हम कहेंगे size of this body and the material of this body is same as this body, right? So in that case, because the size is same and the material also is same, then what would happen? The two will acquire same charge, but it is not necessary. What I am saying, if I take a similar container which can accommodate 10 liter of water and then I connect them, तो क्या होगा? प्रेशर बराबर कब होगा? जब दोनों में 5-5 लीटर पानी होगा. कब? जब ये भी ऐसा हो और ये भी ऐसा हो. अब मुझे बताइए कि अगर मैं इस तरह का एक वेसल लूं और इसको इससे जोड़ूं तो क्या होगा? तो इसमें ज्यादा आ जाएगा, है ना? इसमें आ जाएगा 6 लीटर, इसमें बचेगा 4 लीटर. जिसमें 10 था उसमें 4 रह गया, जिसमें कुछ नहीं था उसमें 6 आ गया. तो कंडक्शन में ऐसा हो सकता है कि जो देने वाला है वो गरीब हो जाए और जिसको मिल रहा था दैट बिकम्स रिचर. ये सिर्फ कंडक्शन में ही पॉसिबल है कि आप चले थे किसी को चार्ज करने और पता चला कि खुद ही के पास नहीं रहा, राइट? So this process of conduction is that, you know, you do this kind of friendship with people. In the exam you try to show कि खुद का नहीं करना, उसको ज़्यादा दिखाना है. इसके प्रोसेस में क्या हुआ, पता चला उसके तो 90 आ गए और आपके 70 आए. क्यों? उसने खुद का काम भी किया और आपसे देख भी लिया और आप उसको दिखाने में ही रह गए.